yesterday we have learned about what are integers. Okay, so let's recall what are integers. It's a set of numbers which includes negative numbers, 0 and positive numbers. Now think what is the need or what is the use of negative को हम use करेंगे जब हमें कुछ पहले की चीज या हमें कुछ ली हो. In that case हम क्या use करेंगे negative numbers. Positive जो आने वाला है after 0 जो आएगा सब हम क्या use करेंगे positive numbers. Okay, and natural numbers are counting numbers. Whole number that includes 0 with natural numbers and then integers. Okay, then we have started with different operations. Okay, so first we will learn about addition and then we will learn about subtraction. So let's revise some question and then we will switch towards the multiplication and division part. So let's start. Okay, so we will revise some questions and with the help of that we will revise the techniques which we have learned yesterday. Okay, so let's start. So first of all we have learned about addition. Okay, so let's see. Okay, so first question we have 11 plus 5. This is a very basic question. 11 में 5 का ऐड करना है, that will be 16. Okay, second question we have minus 14 plus 22. Okay, now think of this question. Again, बहुत confusion होता है. पहले minus 14, फिर plus 22 कैसे करें? So what is the basic logic? Think what are the sign of these two numbers? एक जो है negative, एक जो है positive. तो basically this is a case of different sign. And मैंने बताया जब भी अगर different sign हो, we will subtract the numbers. Okay, so मत देखो सोचो सिर्फ क्या करो 22 minus 14 कितना था सोचो, that will be 8. Okay, now what is the second step? We need to find which is the larger sign. Okay, so number is 22 is greater number and sign of this number is addition, so answer will be plus 8. Okay, so this is a case of different sign, this is a case of same sign. Okay, let's see one more question. It is given 19 minus 25. सोचो क्या आएगा इसका आंसर? What will the logic first? Different sign, एक प्लस है एक माइनस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Subtraction again. And पहले आपको सोचेगा सर 19 minus 25 कैसे माइनस करें? ठीक है, तो अगेन क्या सोचना है हमें कि दिस इज अ केस ऑफ डिफरेंट साइन एंड डिफरेंट साइन है मतलब क्या करना है? सबट्रैक्शन. तो 25 minus 19 सोचो, दिस विल बी 6. अब देखो व्हाट इज द साइन ऑफ ग्रेटर नंबर? इट इज माइनस, तो आंसर विल बी minus 6. ओके, ट्राई वन मोर क्वेश्चन. इट इज गिवन minus 17 plus minus 5. Think what will be the answer of this question? So again, this is a case of same sign, है ना? Minus minus. तो again सबसे पहले add है, तो हम क्या कर देंगे? 17 plus 5, this will be 22, है ना? And again minus minus, तो same sign हम put करेंगे, this will be your 22. Okay, so what is the basic logic? This is a very fundamental, and अगर ये fundamental clear है, तो further standards में कभी भी आप integer number system में रखोगे नहीं. So this is very crucial. And for that ये हमारा जो टेबल है, ऐसे टेबल्स फ्लो चार्ट जो भी बहुत हेल्प करते हैं. एंड ऐसे फ्लो चार्ट्स हमें हमारे नोट्स में भी बनाने हैं. विद द हेल्प ऑफ दैट जब भी हमें रिवाइज करना हो क्विकली हम गो थ्रू करके उस टेक्निक्स को याद कर लेंगे. ठीक है, सो एडिशन की दो टेक्निक हमने देख ली. अगर दो नंबर को ऐड करेंगे, अगर सेम साइन हो तो क्या करना है? उनको ऐड करना है सिंपली, एंड वी विल पुट द साइन ऑफ द सेम नंबर्स. And in the addition part, if the two numbers have different sign, addition and subtraction, so first of all what we will do, we will subtract their numbers and put the sign of the larger number. Okay, this is the technique. Now let's see for the revise quickly for subtraction part. Again subtraction में क्या हो गया? First of all दोनों नंबर जो है कैसे है? Positive integer. तो 5 minus 4 very easy sir. ये क्या पूछ रहा है? Yes, but still this is a very basic part. Now let's see second part. What if number is something like 9 minus of minus 7? ठीक है, अगेन एडिशन है.
ठीक है। अब इसके बाद टेक्निक क्या बताई हुई 9, जो माइनस है उसे हम क्या करेंगे प्लस। ओके नाउ राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7, तो -7 का इनवर्स क्या होगा, इट विल बी +7, तो 9 + 7 कितना हो गया 16। Is it clear? Okay, let's try one more question. It is given 15 minus of -8. Now try this question. What will be the answer of this question? So again, this is a case of subtraction. Okay, and different sign. एक पॉजिटिव है और एक क्या है नेगेटिव है. तो in this case हमें क्या करना है 15 माइनस को क्या कर देंगे प्लस. Additive inverse of -8 क्या होगा, it will be +8, तो 15 + 8 this will be 20. Okay, so again दिमाग में टेक्निक डालो. क्वेश्चंस हम 100 क्वेश्चन भी कर लेंगे, पर उससे पहले एक फंडामेंटल हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए अच्छे से कि अगर हमारे पास दो नंबर है, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, सेम साइन है उससे सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंट साइन है तो पहले हम क्या करना है उसको ऐड करना है एंड देन एडिटिव इनवर्स करना है. ठीक है, सो दिस थिंग वी हैव लर्न यस्टरडे. ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर विद डिफरेंट अदर ऑपरेशंस. Okay, now let's see one more question based on this. It is given -8 and -3. And it is given -8 and -3. ठीक है, अब हमें क्या करना है सोचना है कि फर्स्ट नंबर को एज इट इज रहने देना. ठीक है, तो वी विल राइट -8. Okay, now again what is the condition, जो नेगेटिव माइनस साइन को हम क्या करेंगे प्लस साइन, this will be plus. Okay, now again ये नंबर write down the additive inverse of that number. तो 3 का additive inverse क्या होगा, it will be -3. ठीक है यहाँ तक. now again addition आ गया. we will learn the addition part with the same sign, है ना. so -8 -3 it will be again 8 + 3, so directly it will be 11. and same sign दोनों की क्या है, same sign minus, so our correct answer will be -11. okay, so we will practice more questions and you will get to these questions. just currently एक बार में logic words दिमाग में रखना है. so this is the part of subtraction. now we will start with the multiplication part, है ना. so again think of what are the different cases. क्या क्या केस हो सकते हैं multiplication of integers में. दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं. ठीक है, देन दोनों नंबर कैसे हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं. ठीक है, देन एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव. तो बेसिकली अगेन देयर आर 3 डिफरेंट केसेस एंड बेस्ड ऑन दैट हमें समझना है कैसे इस पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. पहले हम लॉजिक समझेंगे, उसे हम नोट करेंगे एंड देन वी विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so let us understand the rules. Okay, what are the different rules? First, there are two conditions. First is multiplication with the same sign. What is it? Is multiplication with the same sign. And second category we have multiplying with the different sign. Okay, so let's understand one by one. We have number 2 into 14. ठीक है, yes, it is very easy. सर क्या हो तो easy बता रहा हूँ. Which is 40 to the 28. But इसमें logic समझो. What is the rule of sign? दोनों ही नंबर जो है वो कैसे सेम साइन है. This is +2 + 14, है ना. तो correct answer will be +28. तो क्या करना है, अगर सेम साइन हो तो उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा कंपल्सरी. Okay, let's try one more question. 4 into 13. This is a case of same sign. and अगर same sign है तो अभी क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है and आंसर भी जो होगा वो क्या होगा, same sign वाला है, that is positive number. तो 13 4s are, so it will be 50. Clear? Okay, so let's see another case. We have -12 into -4. चलो मल्टीप्लिकेशन आ गया. ठीक है, अब दोनों नंबर देखेंगे हम. दिस इज अगेन माइनस साइन, दिस इज आल्सो माइनस साइन. बट हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि दोनों ही नंबर की जो साइन है वो सेम है
है ना, यहाँ पे प्लस 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 and here it is minus minus, so same sign again. So what we will do, we will just product the number, that is 12 4s are 28 and answer will be always in the positive sign. तो अगर मल्टीप्लिकेशन में क्या ध्यान रखना है, अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो एंड दो नंबर का साइन क्या है, सेम है, चाहे दोनों पॉजिटिव में हो या दोनों नेगेटिव में हो, हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे एंड आंसर विल बी विद द ऑलवेज पॉजिटिव साइन. Okay, let's try few more questions. You will understand. It is given minus 7 into minus 8. So think what will be the answer of this question. This is a case of socho same sign. Yes, negative negative है, but this is a case of same sign. Okay, so क्या लिखना है, 8 7s are, it will be 56 and answer will be always in positive. है ना, तो अगर सेम साइन हो, प्रोडक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो आंसर में से क्या होगा, उसका पॉजिटिव ही होगा. ओके, चलो क्विकली कुछ प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस. 40 into 3, इसका आंसर अगेन यस 40 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन -15 into -6. ओके, सो अगेन यहाँ पे भी क्या करना है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है ना, एंड अगेन दिस इज अ केस ऑफ सेम साइन. तो सेम साइन अगर होगा तो हमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एंड आंसर जो होगा इट विल बी द पॉजिटिव साइन. ठीक है, सो ये फ्लो चार्ट हमें एकदम माइंड में रखना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करें नंबर विद द सेम साइन, then what we will do, we will do the product and answer will be the positive sign. Okay, you can see here 2 3s are 6. ठीक है, this is the first condition for multiplication. I hope this is clear. Now let's see what if there are numbers with a different sign. Okay, so let's start. Okay, so we have a number -2 into 3. Okay, now again we are doing multiplication. So it is very easy. 2 is a 6, but we need to take care of the sign part. Okay, so now this is a case of first number is of minus sign, second number have plus sign. This is a case of different sign, है ना. जब भी different sign होगा तो क्या करना है, हमें multiply करना है, प्रोडक्ट करना है, but in this case हम क्या करेंगे, always minus sign put करेंगे. Okay, so 2 3s are 6 and यहाँ पे different sign वाला केस हो गया, तो आंसर जो हो क्या होगा, -6. ठीक है, again let's try one more question. It is given -30 into 3. ठीक है, again think क्या होगा इसका आंसर. This is a case of different sign. -30. This is +3. So different sign. So what is the rule? First multiply the numbers. 13 3s are 39. And this is a case of different sign. And different sign हो तो क्या कर देंगे यहाँ पे, माइनस. Are you getting? Okay. अब किसी को डाउट है, सर आपने यहाँ पे फर्स्ट नंबर नेगेटिव लिखा है. What if अगर पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो तो भी कुछ नहीं, सेम रूल लगेगा. लेट्स सी 7 into it is given -11. ठीक है, मेन बेस ऑपरेशन इज मल्टीप्लिकेशन. ओके, नाउ दिस इज अ केस ऑफ डिफरेंट साइन. एक क्या है यहाँ पे प्लस साइन, एक क्या है यहाँ पे माइनस साइन का है. ठीक है, तो डिफरेंट साइन हो गया, तो क्या लॉजिक है, पहले का उसका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन. 11 7 सा इट इज 77, है ना. नाउ दिस इज अ केस ऑफ डिफरेंट साइन. ठीक है, तो डिफरेंट साइन हो गया, मतलब क्या करना है हमें, माइनस. क्लियर है सभी को. ठीक है, अब आप एक बार ट्राई करेंगे सभी एंड लेट्स सी इफ यू आर गेटिंग द करेक्ट आंसर. 9 into -8 -5 into -4. Try these two questions with the help of this logic that we have learned currently. What is the answer? What is the answer of this question? Yes, again this is a case of negative sign, है ना. First one is negative, second one is there positive, the different sign. So 9 8s are, it will be 72.
For different sign तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे negative, it will be minus 7. Okay, now again think of this question. Base operation is multiplication. दो नंबर को हमें क्या करना है मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे दोनों नंबर्स कैसे हैं अगेन सेम साइन है. जब भी सेम साइन हो तो हमें क्या करना है प्रोडक्ट करके प्लस साइन लगा देंगे. तो 5 4s are 20 and this is minus minus, this will be plus 2. Okay, so this chart, this classification वो हमें बहुत ही अच्छे से माइंड में रखना है कि अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं विद द सेम नंबर, प्लस प्लस हुआ तो भी आंसर किस में होगा प्लस में, इफ माइनस माइनस में हुआ तो भी आंसर प्लस में, क्योंकि माइनस माइनस इज अगेन अ केस ऑफ अ सेम साइन. ओके, एंड सेकेंडली मल्टीप्लाई द नंबर विद डिफरेंट साइन, एक प्लस में है एक माइनस में है, या एक माइनस में है एक प्लस में, तो आंसर विल बी ऑलवेज इन द नेगेटिव साइन. ओके, सो इतना ये देख के हमें कुछ चीज समझ आनी होगी कि यहाँ पे कोई बेस रूल चल रहा है ना. व्हाट इज द बेस रूल? लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द एग्जांपल 3 6 18 minus 5 into minus 4, same sign, so it will be positive, and 5 4s are 20, and 7 2s are, this is a case of positive integer and negative integer, different sign. So what we will do, first multiply the numbers, 7 2s are 14, and different sign, the plus minus again it will be minus. Second is minus 2 into 6, the answer will be minus 12, है ना. And again what we can see here is a case of different sign, and different sign is the answer कैसा आएगा वहाँ पे minus. So I hope this is the third operation that we will learn about multiplication part. इसमें और भी कुछ cases देख लेते हैं अपने, but this is the base part that should be very clear, and this will help in all the other word problems and topics and logics. Because कोई भी मैथ्स में हम जाएंगे अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक नंबर्स ही कनेक्टेड होने चाहिए, एंड ये सारे बेस जितने स्ट्रांग होंगे उतने हमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स. ओके, सो ये देखो अगेन मैथ्स में हमें क्या करना है, फ्लो चार्ट्स, लॉजिक बनाने हैं. जितने लॉजिक पावरफुल होंगे उतने इजीली क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो ये अगर हमें चार्ट समझ लिया तो समझ लो मल्टीप्लिकेशन में कभी भी साइन की गलती होगी नहीं. ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन. अगर दो नंबर क्या है पॉजिटिव है एंड दोनों नंबर को क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई, है ना, टू इंटीजर्स एंड बोथ आर द पॉजिटिव साइन, तो आंसर विल बी इन द पॉजिटिव ओनली. ठीक है, आंसर जो है वो कैसा आएगा पॉजिटिव में आएगा, है ना. एग्जांपल इज 7 9s are पॉजिटिव है, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो आंसर भी प्लस में आएगा, दिस विल बी 63, है ना. फिर सेकंड केस हमें दिया है आइदर नेगेटिव इनटू पॉजिटिव और पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, आंसर विल बी ऑलवेज इन द नेगेटिव, क्योंकि डिफरेंट साइन एंड डिफरेंट साइन मतलब आंसर भी ऑलवेज इन द नेगेटिव साइन. ठीक है, सो अगेन या तो माइनस नंबर है और एक प्लस पॉजिटिव इंटीजर है भी है, so answer will be always in the negative part. Example -11 into 4, the answer will be -40. Different sign. Okay, again first number is of positive and second is of negative, so again positive negative, answer will be negative. 12 into 7 -7. Again this is a case of different sign. 12 7s are 84 and we will put here minus sign. तो कैसे याद रखना है, प्लस 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 ओनली इन द मल्टीप्लिकेशन पार्ट, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, एंड लास्ट केस क्या हो जाएगा अगर बोथ द पॉजिटिव और बोथ द इंटीजर आर द नेगेटिव साइन, है ना, तो बेसिकली नेगेटिव एंड नेगेटिव. तो अगेन दिस इज द केस ऑफ सेम साइन, तो क्या करेंगे यहाँ पे प्लस करेंगे. ठीक है, सो यू कैन सी -7 into -5. ठीक है, सो दिस इज सेम साइन, तो अगेन 7 5 is 35 and our answer will be always in the positive because this is a case of same sign. तो क्या टेक्निक हमें याद रखनी है, प्लस इनटू प्लस करेंगे तो क्या होगा प्लस ही होगा, माइनस एंड प्लस अगर होगा तो आंसर विल बी नेगेटिव साइन.
प्लस इंटू अगर माइनस नंबर होगा तो अगेन आंसर विल बी नेगेटिव साइन, एंड अगर नेगेटिव इंटू नेगेटिव है तो आंसर विल बी द पॉजिटिव साइन। ठीक है, एंड ये आप समझिए 10 से लेके 12 से लेके आगे जाओगे हर जगह ये लॉजिक बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, तो दिस विल बी वेरी क्लियर। ओके, नाउ लेट्स सी some more examples and terminology based on this product part. Okay, so we have one example, example 4. It is given minus 12, it is given minus 12 into minus 3. Okay, now think the answer of this question. What will be the answer? Yes, 12 3s are, सबसे पहले बेसिक हमें क्या करना है, it is given multiplication, तो आपको क्या करना है, सिर्फ multiply कर 36. Now think of the sign, दोनों के साइन देखो क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव, मतलब कौन सा केस हुआ, दिस इज अ केस ऑफ सेम साइन, एंड सेम साइन में क्या आ जाएगा, प्लस, द करेक्ट आंसर इज 36, प्लस नहीं यूज होती यहाँ पे चलेगा। ओके, चलो नाउ some special case that we need to understand. Okay, it is given product of 3 or more negative numbers. ठीक है, तो देखो कुछ एग्जांपल समझते हैं। अगर हम क्या करें, -1 into -2, तो क्या आंसर आएगा, सोचो सभी। -1 into -2, it will be +2. Okay, what is the logic? -1 है, -2 है, ठीक है, सेम साइन है, तो 2 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, एंड सेम साइन मतलब प्लस हो गया। ओके, इसमें वन मोर पार्ट हम ऐड करते हैं, -1 into -2 into -3। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा। सर आपने जैसे दो चीज का बताया, दो नंबर बताया, तो 3 नंबर है, ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो अगेन लॉजिक पे जाओ। यस, वी हैव लर्न अबाउट 2 नंबर्स, तो फर्स्ट think only about 2 numbers, है ना। So again -1 into -2, forget about this -3, है ना। So -1 into -2, तो सोचो इसका आंसर क्या होगा, सेम साइन है तो 2 1 जा 2 हो गया, एंड पॉजिटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ओके, एंड अगेन क्या बच गया यहाँ पे, -3। Now think ये कौन सा केस हो गया, numbers with different sign, the 2 3s are 6 and different sign you will put here minus sign, so our answer will be in the negative part. Okay, now again let's try one more question. It is given -1 into -2 into -3 into -4. Now think what will the answer of this question? Again, so 4 नंबर, आपने 2 नंबर सिखाया है, तो अगेन जो बेस है उस पे जाओ, think only about 2 numbers and apply the rules separately and try the answer. So how will you think? Again, this is -1 into -2, this is the first pair, and -3 into -4, this will be the second pair. Okay, so -1 into -2, same sign, again multiply कर दो, 2 1s are 2, same sign, तो answer will be always in the positive part, plus plus plus, minus minus plus, the correct answer is +2 into, this is 3 4s are, तो क्या करोगे, 12. Now again this is a case of minus minus plus, so correct answer is +12. Now this is a case of सेम साइन अगेन, तो प्लस प्लस, अगेन प्लस में रहेगा आंसर, 12 2s are, करेक्ट आंसर विल बी 24. ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन, नोटिस which is अभी -1 into -2 into -3 into -4 into -5. Now with the same logic try this question. What will be the answer of this question? So think the rules we have learned, separate it out as a pair, try to solve and see what will the answer sign of this question.
So you can think as this is a pair of two numbers, minus 1 into minus 2. So 2 ones are 2. Again this is minus minus plus, क्योंकि same sign तो क्या हो जाएगा वो positive ही हो जाएगा. Again let's see, this is the second. 3 fours are again 12, and again minus minus it will be plus. Okay, this is plus 12, and still यहाँ पे क्या बच गया minus. Okay, and again now how we will solve? First think of this pair, 2 into 12, so 12 2s are 24 into minus 5. Okay, now this is a case of different sign. First of all multiply this number, so 24 5s up, it will be 120. Okay, now this is a case of different sign, plus minus minus, the answer will be minus 120. Okay, now based on these questions let's conclude something important part. Okay, and that is something related to sign, है ना. तो देखते हैं एक बार. देखो फर्स्ट क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया, यहाँ पे दो नंबर्स थे, जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आया. अगेन जब तीन नंबर हमने मल्टीप्लाई किया तो कैसा आया? नेगेटिव आया. फिर अगेन यहाँ पे 4 नंबर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसा आया? पॉजिटिव आया. फिर 5 नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर कैसा आया? माइनस आया. तो ये नंबर देख के हमें क्या पैटर्न समझ आ रही है? व्हाट इज द पैटर्न बिहाइंड दिस? थिंक. यस, अगर नंबर कैसे हो? इवन हो, है ना. इफ द नेगेटिव इंटीजर्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ द नेगेटिव इंटीजर्स, if the negative integers are multiplied even number of times, है ना. जब भी नेगेटिव इंटीजर क्या करेंगे? इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर विल बी ऑलवेज विद द पॉजिटिव साइन. ठीक है, तो आंसर जो आएगा हमसे कैसा होगा? पॉजिटिव. लेट्स सी, दिस इज 1 into 2, दिस आर टू नंबर्स इवन, इसका आंसर देख लो कैसा हो गया? पॉजिटिव. वापस देखो 1 2 3 4 इवन, इसका आंसर पॉजिटिव होना चाहिए. देख लो प्लस 24. यस, हाँ. एंड व्हाट इज द सेकंड पॉइंट? व्हेन इंटीजर्स नेगेटिव are multiplied odd number of times, है ना, the result will always have a negative sign, है ना. तो again let's see the example. This is the example we have solved. 1 2 3, तो यहाँ पे क्या किया हमने? मल्टीप्लिकेशन odd times, so answer will be the negative, है ना. Let's see this one more. 1 2 3 4 5, तो again आंसर कैसा होगा इसका? नेगेटिव. तो क्या हमने सीखा यहाँ पे? अगर नेगेटिव इंटीजर्स है एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं? अगर इवन टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, तो उसका आंसर जो होगा हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव. If you are multiplying the numbers, negative integers with even times, the answer will be always with the positive sign. And if you are multiplying the negative integers odd times, then the answer will be with the negative sign. अगर odd अगर number times आप क्या कर रहे हो? multiply कर रहे हो, तो आंसर क्या होगा? हमेशा माइनस में. This is a very important part. Again, this will help a lot in the calculation part also, because there are so many times we get the correct answer, but because of the sign, है ना. एग्जाम देने जाते हैं, पेपर देके भी आते हैं और इतना अच्छा पेपर गया रहता है, फुली मार्क्स आएंगे. मतलब पेपर आता है तो सीधी मिस्टेक में 2-3 मार्क्स कट जाते हैं. उसका लॉजिक ये है कि प्लस जाना चाहिए तो माइनस आ गया, माइनस जाना चाहिए तो प्लस आ गया. तो दिस आर सम वेज, टेक्निक्स, रूल्स जो अगर हम दिमाग में रखेंगे तो कभी भी गलत होगा नहीं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट मल्टीप्लिकेशन पार्ट. ठीक है, सो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन सीखी दैट इज अबाउट मल्टीप्लिकेशन. लेट्स क्विकली रिवाइज एंड देन वी विल सी द डिवीजन पार्ट. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्नड इन मल्टीप्लिकेशन पार्ट. फर्स्ट अगेन दो नंबर को मल्टीप्लाई करें, एकदम बेसिक पता रखो. मल्टीप्लिकेशन बीच में है, अगर दो नंबर प्लस प्लस है तो आंसर विल बी ऑलवेज विद द प्लस साइन. माइनस माइनस है, अगेन आंसर कैसा होगा? प्लस. प्लस इनटू माइनस है तो आंसर विल बी ऑलवेज विद द नेगेटिव साइन. एंड माइनस इनटू प्लस है तो अगेन आंसर विल बी विद द नेगेटिव साइन, है ना. एंड सेकंड रूल हमने क्या देखा कि अगर आप ऑड टाइम्स नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो विद द नेगेटिव इंटीजर्स तो
तो क्या हो जाएगा, माइनस ही रह जाएगा। एंड अगर हम क्या करें, इवन टाइम्स ऑफ अगर क्या करें नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड अगेन ध्यान रखिए यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने की बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर आर डिफरेंट केसेस आल्सो दैट वी विल सी। ओके, सो अगेन डिफरेंट केसेस कैसा पॉसिबल हो सकता है, तो अगेन वी हैव 1 into 2 into minus 3, and 2 1s are 2, अगेन पॉजिटिव ही है, एंड ये आ जाएगा minus 3, तो यहाँ पे एक ही सारे नहीं, पर अगेन और तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ओके, तो दिस आर द रूल्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट मल्टीप्लिकेशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द डिवीजन पार्ट। सो टिल नाउ हमने क्या क्या देखा, एडिशन कैसे कर सकते हैं इंटीजर्स का, then subtraction, then multiplication. Now last part is about how we can divide the integers. Okay, so let's see. Okay, now think क्या क्या यहाँ पे डिफरेंट केस हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम डिवाइड करें दोनों ही पॉजिटिव एंड बोथ द इंटीजर्स आर विद द पॉजिटिव साइन, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव। ओके, सेकंड केस विल बी one number is of positive, another is of negative. Okay, third condition is first number is numerator is a negative and denominator is positive. Okay, then fourth condition, both the numbers are the negative sign. Okay, so we need to understand what will be the sign of the answer which we will find. डिवाइड तो करना आता ही है, बट जब डिवाइड करेंगे साइन सब डिफरेंट होगी, तो वहाँ पे कौन से साइन के साथ आंसर आना चाहिए वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी फर्स्ट, इट इज गिवन 8 डिवाइड बाय 4। ओके, नाउ अगेन थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल डू द मेन ऑपरेशन, जो भी हमारा मेन ऑपरेशन है पहले वो कर देना है, ठीक है। तो थिंक 8 डिवाइड बाय 4, आंसर क्या होगा इसका, 2 होगा, यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 कर लेंगे। अब साइन हमें ध्यान देना होगा, तो दिस इज अ केस ऑफ पॉजिटिव, दिस इज अ केस ऑफ अगेन पॉजिटिव। नाउ सेम जो रूल हमने पढ़ा है ना मल्टीप्लिकेशन वाला, वही कि इफ बोथ द नंबर्स हैव द सेम साइन, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो आंसर भी जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो आंसर विल बी +2 ओनली, ठीक है। वापस लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन, इट इज गिवन 24 डिवाइड बाय 4। थिंक व्हाट विल बी द आंसर। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, just simply do the operation, 24 divided by 4, it will be 6. Now think of the sign, this is positive, this is positive, so again plus plus plus, the answer will be plus 6. Clear? Okay, now third part, let's see, it is given 54 divided by -18। अब सोचो इसका आंसर क्या होगा, एकदम बेसिक लॉजिक पे जाना है हमें। सबसे पहले क्या करना है, नंबर्स को डिवाइड करो, तो 54 डिवाइडेड बाय 18 कितना होगा, इट विल बी 3। अब हमें साइन का सोचना होगा, ठीक है। तो अगेन दिस इज अ केस ऑफ प्लस, दिस इज अ केस ऑफ माइनस। याद करो मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, प्लस माइनस, आंसर विल बी इन द नेगेटिव, ठीक है। तो अगेन दिस इज द केस ऑफ प्लस माइनस, द आंसर विल बी इन द नेगेटिव है ना। तो वो एक फंडामेंटल में बनाना है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए, अगर प्लस प्लस हो तो प्लस में आएगा, प्लस माइनस तो माइनस में, माइनस प्लस तो माइनस में, एंड माइनस माइनस तो आंसर विल बी द पॉजिटिव साइन, है ना। वही सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई होगा। एक बार वापस ध्यान से देखिए सभी, इट इज गिवन -42 डिवाइडेड बाय 40, व्हाट विल बी द आंसर, थिंक 42 divided by 14, it will be 3. Sign will be
again negative. Why so? Because this is negative, this is positive. So different sign and different sign में हमेशा आंसर क्या आएगा? माइनस. Okay. Now let's see one more example. It is given minus 60 upon minus 14. What will be the answer of this question? What is the basic rule? First do the operation. And here the operation is division part. So 16 divided by 4, it will be 4. Now think of the sign. Both the numbers have the same sign. And you have the same sign, the answer will always be the positive. The answer will be always the positive. This will be plus. So again, let's see one more example. Minus 20 minus 2. So 20 divided by 2, it will be 10. And minus minus, again answer will be the positive sign. So we will write here plus 10. Okay, so again these are the 4 different cases for the division part, and logic is same that we have learned on the multiplication part. If both the numbers have the same sign, that is either both the numbers are positive or either both the numbers are negative, answer will be always with the positive sign. And then second situation, if both the numbers of the division part have different sign, either of plus minus or minus plus, answer will be always with the negative sign. है ना? So मूल लॉजिक दिमाग में रखो, प्लस प्लस आंसर क्या आएगा? प्लस में. माइनस माइनस आंसर क्या आएगा? प्लस में. प्लस माइनस आंसर क्या आएगा? माइनस में. माइनस प्लस आंसर क्या आएगा? माइनस में. ओके, लेट्स ट्राई फ्यू मोर क्वेश्चंस जिससे हमें और समझ आएगा ये लॉजिक. 7 it is given 50 divided by minus 5. सोचो क्या होगा इसका आंसर. 50 by 5, this will be 10, and this is a case of different sign, plus minus. The correct answer will be minus. Okay, let's try one more question. It is given minus 40 divided by 2. So 40 divided by 2, it will be 7, and plus minus क्या हो जाएगा? Again minus. Clear? Let's see one more question. It is given minus 28 upon minus 4. सोचो क्या होगा इसका आंसर? Again 28 divided by 4, this will be 7, and minus minus, it will be plus. Okay, so again these are the 4 basic rules that we need to understand and apply in the questions. If plus plus given, the answer will be the positive sign. Plus minus, it will be the negative sign. Minus plus, it will be negative. Minus minus, it will be. Okay, so I hope that this division part is also clear. So till now we have learned about operation on integers, all the 4 parts, that is addition, subtraction, multiplication and division. Now I will give the questions based on these 4 operations and any random question, and we will try to solve it. Think of the logic that we have learned, apply the logic and try to find the answers. Okay, so let's see. And try as fast as you can do. Is given minus 7 plus minus 9, minus 50 minus 7, 54 divided by minus 27. Minus 8 minus 5 minus 3 minus 4 17 into minus 3. Okay, so these
are the questions from all the four operations. Think which are the different condition, which are different operation, and based on that try to solve the answers. Okay, quickly. You can pause and solve the questions and then check the answers. Okay, so you can say this is -7 -9. मेन ऑपरेशन अगेन एकदम फंडामेंटल पे जाओ. मेन ऑपरेशन क्या है सबसे पहले देखो. दिस इज प्लस, तो नंबर को हमें क्या करना है, ऐड करना है. बट अगेन इसमें क्या ध्यान रखना है, सेम साइन है ना. तो एडिशन में अगर सेम साइन हो तो नंबर क्या करना है, हमें ऐड करना है. तो 9 + 7 इट विल बी 16. एंड एडिशन में क्या होता है, अगर सेम साइन है तो सेम साइन रख देना है. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So many times we get confused, है ना, कि सर माइनस माइनस आपने प्लस बताया, पर यहाँ पे तो माइनस माइनस आप माइनस ही लिख रहे हो, है ना. तो ये कैसे हो रहा है. तो अभी थोड़ा सा ध्यान रखें कि जो माइनस माइनस प्लस जो होता है कब होता है, जब नंबर्स हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई या तो डिवाइड करेंगे. ठीक है. जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन में थोड़ा सा वो लॉजिक हमें पता रहना है अलग वाला. क्या कि अगर दोनों नंबर क्या हो सेम साइन, तो आंसर भी क्या होगा, सेम साइन वाला ही होगा. ठीक है. या तो प्लस प्लस तो प्लस में, माइनस माइनस तो माइनस में. एंड अगेन डिफरेंट साइन होगा तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. एंड उसमें क्या करेंगे, जो लार्जर नंबर होगा उसकी साइन को हम करेंगे, है ना. सो करेक्ट आंसर विल बी -16. +16 किया और उसमें भी थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें. देन सेकंड क्वेश्चन इज गिवन -15 into -7. Okay, so 15 sevens are, it will be 105. अब मल्टीप्लिकेशन में यस बोला जो करेक्ट है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा. तो आंसर विल बी +10. ओके. थर्ड क्वेश्चन इट इज गिवन 54 डिवाइडेड बाय -27, है ना. तो 54 डिवाइडेड बाय 27 इट विल बी 2. नाउ अगेन दिस इज अ केस ऑफ प्लस माइनस. The correct answer will be -2. Okay, now think of this question. -8 and minus of -5. So what we will do here, पहले तो नेगेटिव है तो -8. माइनस को क्या करेंगे हम, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो this will be plus. Then -5, write down the additive inverse of -5, it will be +5. Okay, now this is a case of different sign, है ना, +5 and this is -8. This is a case of different sign. and जब भी different sign तो क्या करना होता है, subtraction, है ना. now 8 - 5, again ऐसा मत सोचो कि सर -8 + 5 कैसे करेंगे. लॉजिक पे जाओ. different sign तो क्या करना है, हमें subtract करना है. तो 8 - 5 will be 3. क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3. अब सोचो कौन सा नंबर जो लार्जर नंबर का साइन क्या है. तो 8 जो है लार्जर नंबर का साइन क्या है, माइनस. तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -3 आएगा. ठीक है. अगेन राइट दिस क्वेश्चन. दिस इज गिवन -3. माइनस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस कर देंगे. एंड राइट डाउन द एडिटिव इनवर्स ऑफ, क्या हो जाएगा, -4 इज +4. ओके. नाउ अगेन दिस इज अ केस ऑफ डिफरेंट साइन. तो सब्ट्रैक्ट करो 4 - 3 तो कितना आ जाएगा, 1. अब प्लस में आगे माइनस में आएगा, सोचो क्विकली. तो अगेन लार्जर नंबर इज 4, उसकी साइन यहाँ पे क्या है, प्लस में है. तो आंसर क्या आएगा इसका, +1 आएगा. एंड आगे जाके थोड़ी सी टेक्निक बताता हूँ, हमें सीखना है कि जब भी माइनस माइनस हो वो अपना प्लस ही हो जाएगा. एंड दिस माइनस एंड ये ब्रैकेट में -4 लिखा, दैट मींस हम नंबर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसलिए यहाँ पे लॉजिक होता है कि माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस विल बी प्लस. बट यस, अभी हमने स्टार्ट किया है तो एक बार बेस पे हम फोकस करेंगे एंड देन डायरेक्टली वी कैन सॉल्व बाय दिस टेक्निक आल्सो. ओके. नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. 17 3s are, again base operation is multiplication, तो 17 3s are, it will be 51. Now this is plus, this is minus,
So which sign you will use? It will be negative minus 50. है ना? मल्टीप्लिकेशन में प्लस माइनस माइनस. क्लियर है? वेरी गुड. इफ अगर सारे आंसर करेक्ट हैं एंड अगर एक दो क्वेश्चन में मिस्टेक अगर हुई है तो ध्यान रखिए कि कब कौन सा कैलकुलेशन यूज करना है. एंड अगेन कंफ्यूज नहीं होना है. डेली प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप को देख पाएंगे कब कौन सा हमें अप्लाई करना है. ठीक है. चलो फ्यू 3-4 क्वेश्चंस में और सॉल्व करते हैं जिससे और आइडिया आएगा. नाउ ट्राई कि सारे आंसर्स करेक्ट आए. 7th क्वेश्चन इट इज गिवन -44 divided by 11 -50 plus -40. Try this 5 question. You can pause and try the question. And now अपने को challenge करो कि सारे जो 5 questions है write some with the proper sign. Okay? Because हम multiplication, divide, subtraction तो कर ही लेंगे. But the main task is we need to use proper signs. Okay? So let's see. First 7th question, that is -44 divided by 11. First of all, it is a case of division. So 44 divided by 11, the answer will be 4. Okay, now we will try to find which sign we will use. This is a case of minus plus. So minus plus answer will be with the negative sign. So answer will be -4. Okay, now think of this question. It is -50 plus -40. And so again, this is a case of plus. Now think whether they are the same sign or different sign. So basically here it is they are the same sign. So same sign का मतलब क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं. So 50 plus 40 it is 29. And addition में क्या ध्यान रखना है, जो same sign है वो हमें पुट कर देंगे. The answer will be -29. Okay, then -9 into 11 multiplication है तो minus plus answer will be in the minus part. 9 into 11 it will be 99. The correct answer will be -99. Okay, now this technique that you have learned, and negative number का क्या होगा. So these are 3 numbers that is odd. The answer will be in the negative sign, है ना. Let's see, -1 into -2, minus minus plus, it will be +2 into -3. Now 2 3s are 6, and this is a case of different sign. The plus minus answer will be with the minus sign. Okay, then again 1 2 3 4 5. Again this is a case of odd number. The answer will be with the negative sign. You can think as this is a pair, minus minus plus, and this will be +2. Minus minus plus, and this will be 12, and this will be -5. Again plus 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 24, and into -5. Again plus minus minus, the correct answer will be -150. ठीक है. एंड इतना फर्स्ट टाइम हम कर रहे थे तो डिटेल में कर रहे हैं. डायरेक्टली आगे हम जाके कैसे करना है कि हमें सोच लेना है कि कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5. तो डायरेक्टली क्या करेंगे, ऑड नंबर्स देन वी पुट द माइनस साइन. ओके, अब क्या करना है, सिंपली को मल्टीप्लाई करो. 1 2 is 2, 2 3 is 6, 6 4 is 24, 24 5 is 120. The answer will be 120. This is the technique base part that we need to understand, and this is a direct way that we can solve and we can save the time, because in mathematics parts we need to complete the paper timely, and for that we need to solve the question very quickly, and for that we should know the techniques very clearly.
Okay, so I hope it is clear to everyone. So till now we have learned about operations. Anna, so let's conclude what we have learned till now, and then we will do the properties, different properties in the next lecture. Okay, so we have started with integers. It's a set of numbers that includes negative, positive, zero, and इसी में हमने देखा कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन में क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं. And then we have started with the operation part. 4 different operations we have seen. For first is for addition, second is for subtraction, third is for multiplication, and fourth is for division. So this is the first main topic for the integer part, and this is very basic, this is very fundamental, and this will help you a lot in the further standards and many exam part also in the 12th standard also. So जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा उतना हम इजीली और आगे आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. ओके, सो आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से क्लियर है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच एवरीवन. हैव अ गुड डे.